Hello guys, welcome to the stream. How are you guys doing? What's up? आज कुछ काम नहीं हो पाया. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से करना. आज आज नहीं हो पाया तो क्या है, कल से करना वापस. दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है. आज घर वाला लड़ाई कर रहा था. ओके. हेलो. हाय वीनू. उनको समझाने में टाइम चला गया. कोई बात नहीं यार, होता है ऐसा कोई कोई दिन. कल से काम कर लेना. वी ऑल गो थ्रू टाइम्स विच आर गुड. समटाइम्स बहुत बार बुरे दिन होते हैं जहाँ पे हम काम नहीं कर पाते, जहाँ पे कुछ नहीं हो पाता. बट इट्स important टू नॉट गिव अप इन these days like this. It's important to keep going. It's important to know that this is a part of life. हर रोज अच्छा नहीं हो सकता आपके लिए. हर रोज ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हिसाब से जो भी आप चाहते हो, जो भी आप एंटिसिपेट कर रहे हो, वैसा हो जाए. यू विल हैव टू गो थ्रू डेज वहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यार ये क्या है, मुझे मजा नहीं आ रहा है. But it is important for you to go through those days, and it is important for you to realize that those days are very important in your life. It's not the wins that will shape you, it's the losses that will shape you in your life. Today is that day for me. It's okay to have those days. It's okay to have those days, guys. My surprisingly, the topic for today's video is similar to that. It's for all people who are not motivated right now, who have not been having a good day, who have been having some bad times in their life, who do not know what to do, where to go. That's what my video covers today. And it will be live soon. I'm like editing it right now. I'm looking for titles actually. I maybe I want your help, guys, to come up with a title for that. And I'll also make a thumbnail for it. Jab something goes very bad, worst possible, do we always have a chance to like redo it, correct or correct it in the future? Of course we do. Until and unless we're alive, we always have that chance. Till we're breathing, we have life in us. There's nothing that we can't do. At least that is the mindset that I have, and I want you guys to have that mindset as well, because that is the reality. Until and unless you're alive, there is nothing that is unachievable. Until death, all defeat is psychological. How beautiful of a line that is. To be honest with you guys, I've been having somewhat of a day like that myself, where I was not feeling like work. I could not have come up with a video title today. Like I did not know what wanted to talk about, what I should do, and I was in general not feeling that good. But yeah, I somehow sat, got to work, recorded the video for today, and I'm done with that. And I'm doing the live right now, and I will hopefully wrap this up in the next 30-35 minutes. I'm hoping to talk to you guys, answer some questions. It'll be fun, and then I'll go to the gym. And yeah, that's the plan for tonight. And then I'll come back. I might meet up with my friends, and that might be my plan for today. And then I'll probably how to feel motivated in bad days. Okay, that's not a bad title. That's a decent enough title. How to feel motivated in bad days. So actually, I'm talking about the mindset in the video. I'm talking about the mindset that you guys need in order to succeed, in order to go through the bad days, and how the bad days are what shapes up to be your life rather than the good days. क्योंकि देखो, अच्छे दिनों में तो सब कोई काम कर सकता है. अच्छे दिन जब आपको तारीफ मिलती है लोगों से, जब आपके आपके चैनल पे व्यूज आ रहे होते हैं, जब आपका काम अच्छा हो रहा होता है, जब सब रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, जब आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही होती है, जब आपके दोस्त आपकी तारीफ करता है, तो सब कोई सब कुछ कर सकता है.
लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि जब ये सारी चीजें नहीं हो रही हो, जब आपको कोई साइन नहीं मिल रहा हो, जब आपके तरफ सिर्फ मुश्किलें मुश्किलें हो, प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, तब भी आप हार ना मानो. दैट इज व्हाट डिटरमाइंस और दैट इज व्हाट डिफाइंस द people who in the long term end up changing their lives forever and making something, creating something, going beyond themselves. How to feel motivated in bad days. I was thinking that I would keep the title to be like, this is all you need for motivation, something along those lines. I don't know why I can't recall that. I should have written that down. I forgot the title that I was coming with. Was it a heavy day? It wasn't a heavy day. It wasn't a heavy day. It was more like a day where I was like feeling rather lethargic. Like I could not come up with a title, and like I'll be honest, like my YouTube channel right now is not doing the best as I would have thought that it would do, and that somehow motivated me much more to do the work. I would not have done work today, but I did it just because of that. Because I was feeling that okay, I'm not up to the par. I'm not progressing as I should be. I've gone a little bit. I've I've toned the things down a little bit. Like when I was starting my YouTube, I was very energetic. I was much more. I was putting much more effort into it than I'm doing in order to improve. I was supposed to be embarrassed by saying this, but jab in my life, I was in my worst, saw no future ahead, and I ate a bunch of medicines hoping I would give up. But then my friends helped me, and I'm good. That's amazing. That's amazing. We all go through periods like that, and it is like literally dependent on how you pick yourself up and how you treat or carry yourself in the days when nothing is going your way, when you're failing, when you're not getting any signs that you should be keep going on, and when you still go on. That is a win. That is what separates people. Not a lot of people watch videos like yours. People want entertainment. No, there are people who want education. There are people who want value. There are people who want to improve themselves. There are people who want to genuinely change themselves. There are people who want to contribute to the world. There are people like that. I don't believe that there aren't people like mine, like me, because I'm a person like me, and if I exist, there is a chance that there is lots and lots of people like that. So trust me, there are people, and I believe that they're very quality. It's a quality audience. I think the kind of people who can get through my videos, they need a certain type of caliber. Like they need to have that patience. They need to have that long term gratification. देखो, रील देखना या सस्ती मोटिवेशन लेना बहुत इजी होता है, लेकिन सिटिंग थ्रू समवन एक्सप्लेनिंग टू यू, but that is like a challenge in itself. Putting work on yourself, like trying to improve yourself, this is something that requires, देखो entertainment अलग होता है, entertainment अलग होता है. Of course majority of people won't want or do anything with that. Majority of the people will want entertainment, but that's okay. I think that is an advantage. Like there is nothing wrong with people wanting entertainment, and it is a good thing. Like there are all kinds of people in the world. Some people are just meant to actually do something. Some people are like okay, they are okay with entertaining, and that is like entertainment, and that is nothing bad about that. I don't believe there is something bad about that. But I genuinely believe that when you're not changing your life, when you're not really putting in the work in your day-to-day life, when you don't have high ambition, when you don't want to change the world, when you don't want to do something big with your life, you are like you're not living the life the best way. Like imagine kings from the past. Imagine people in the past, the warriors. What would they be doing right now? They would actually be carving the world, right? They would go through their day. They would have fun doing it. By the way, this does not mean that I'm talking about a life of sacrifice where everything has to be a sacrifice. I'm talking about like literally, genuinely having fun in life. Like as humans, we are designed to create things. We are designed to help other people. We are designed to solve problems for other people. That is where we thrive. That is how we get happy. That is how we find joy. That is how we find satisfaction. So the minute we start just consuming blindly, that sort of enslaves us. That sort of makes us very fragile. We'll get depressed. We'll feel weird because that is not what we're meant for. We're meant to communicate to people. We're meant to connect to people. And we're supposed to go beyond ourselves. And we're supposed to create something that will help make the world better. I think that is our goal. That is my goal, I believe, by the way. भाई एक एडवाइस दे दो. Hello Satyam, hello. Sure, but I'm talking about majority. I'm trying to talk to people being more social. I watched your videos. It really helped a lot. Really grateful for that. Appreciate it. When appreciate it.
I really appreciate people like you, guys. Like I can see myself in you guys. Like I was like you guys. I used to watch a lot of self improvement content, and that really motivated me. I think that changed my life, and that is exactly what I want to give back to the community, to people like me, my younger self. Like I really used to struggle with the same things like you guys do. Like I was at a stage where I used to just overthink. I was at a stage where I used to think that okay, everything is competition, life is meaningless, and that was not a good stage of my life. Like I was genuinely, like I was scared, I was afraid, I was not doing, I was just passively consuming everything, and I did not want that to be my, like I did not want my life to be like that. And I'm improving, I'm genuinely making progress, which is why even when I have a day, but even when I do the work, I still feel like okay, I could do much more better, I could do better, I could do better. And that's what like keeps pushing that's what keeps pushing me to keep showing up and keep improving. Just showing up is not enough, by the way. Showing up is the first step, of course, that puts you ahead of a lot of people, but just showing up is not enough. Then you'll have to improve as well. You'll have to constantly criticize yourself. You'll have to constantly see what areas can I improve in, what can I do with myself, how can I change this, how can I improve that. It's sort of an obsessive behavior, honestly, if you ask me. It's sort of crazy because most people will not do this, and it's very hard to do. I'm not saying that it's easy for me. It's a journey for me as well, but I hope that if even one person can look at me and take me as an example and they can be inspired to improve, I think the purpose of my channel, the purpose that I like really want to create for, is fulfilled. आज का दिन आज की वीडियो जो मेरी आएगी ना, वो काइंड ऑफ मोटिवेशनल रहेगी. मतलब इट्स फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स. इट्स फॉर पीपल हु हैव बीन स्ट्रगलिंग to do anything in their lives right now. Like they are lost, they don't see any signs, something like that. So my story is supposed to help you get inspired and like to help you, like to give. Basically, it's my philosophy and my mindset, which has helped me a lot in my life. So that's what I'm trying to talk about in my video today. I haven't been come up with a title yet, so I think I need a title for that, guys. मैं आज आपको एक बहुत मामूली सी बात बताना चाहता हूँ. I haven't come up with a title, guys. आज का दिन कैसा गया? आज का दिन गया यार, ठीक था, ठीक था. I would not say it's extraordinary, but ठीक था, अच्छा था, no problem. आपका दिन कैसा गया? Bro, I'm BTech 2-year student from IIT Roorkee. Okay, second year student. I'm working on one startup and I want to work on this full time. I'm thinking to taking dropout and parents का भी pressure है. So what I do? Why don't you work in it while you're actually in your second year BTech? Why are you looking to leave it full time? What I would suggest you is that first you work part time, like you give the free time, that whatever time you get into that startup. एंड जब वो फ्री टाइम में आप जितना कर सको, जितना प्रोग्रेस आए, अगर आपके यूजर्स आ गए, आपका जो भी मेट्रिक हो आपके लिए फॉर योर स्टार्टअप, मान लो यूजर्स, मनी, सम मनी, यू स्टार्ट मेकिंग इट, देन यू कैन शो दैट एज अ प्रूफ टू योर पेरेंट्स कि देखो ये भी है मेरे पास. उसके बाद यू कैन लुक टुवर्ड्स टेकिंग अ ड्रॉप. राइट नाउ यू नीड प्रूफ कि अगर मैं आपके माँ बाप हूँ, लाइक आई एम योर पेरेंट राइट नाउ. इफ माई सन इज टेलिंग मी और माई डॉटर वट एवर, लाइक इट्स सन एज यू, अगर मुझे बेटा आके बोलता है कि देखो मेरा स्टार्टअप है, मैं आईआईटी में हूँ, मैं सेकंड ईयर बीटेक में हूँ, लेकिन मुझे छोड़ना है क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना है, सो दैट डज नॉट गिव मी मच आइडिया. राइट, दैट्स टू मी लाइक, देखो रिस्क टू मी एज अ पेरेंट, आई वुड लुक एट इट एज अ रिस्क. बट अगर वो आके मुझे दिखाए कि देखो इतने पैसे जनरेट हो रहे हैं, देखो इतना पोटेंशियल है, देखो मैंने अभी तक ये किया है, ये किया है, ये हो सकता है इसका, एंड इसमें इतना फायदा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो ये होते होते जाएगा, then I would be more inclined to do that, right? So that is a starting step. Do this, consider this, okay Ankush? भाई आप वर्कआउट और डेली मॉर्निंग वॉकिंग में भी अभी कंसिस्टेंटली कर रहे हो? नहीं, वर्कआउट मेरा कंसिस्टेंट नहीं है अभी, बिकॉज लाइक राइट नाउ आई हैव बीन गोइंग थ्रू, लाइक हमारा एक कम्युनिटी का वो चल रहा है अभी, सो आई हैव टू गिव सम टाइम टू दैट इन माय लाइक डे टू डे. तो थोड़ा हेक्टिक हो गया है मेरे लिए. आई एम नॉट consistent, I'm not walking and working out. I work out every 2 days. I'll be working out today as well. I work out every 2 days. That's what's been happening. I don't work out consistently right now. In the last week I haven't worked out consistently. I've taken a few days off from that, and walking bhi thodi ruk gayi hai. So I'm not consistent in that. The only thing I'm consistent is, and have been consistent in, my priority, that is my work right now.
यार भाई, आपको स्पिरिचुअल बुक्स कैसे लगते हैं? कुछ काम के भी है कि नहीं? और काम के है तो क्या है उन सब बुक्स में, क्या मेनली बताया गया है? व्हाट्स योर थॉट्स? माय थॉट्स आर कि देखो, स्पिरिचुअल बुक्स आर ओके. इट्स लाइक आई वुड अवॉइड दैट. लाइक इट, सी, इट इज अ फेज. इट वाज अ फेज फॉर मी कि जहां पे मैं बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था. आई यूज्ड टू लाइक थिंक अबाउट द डीपर थिंग्स इन लाइफ, कि ये सारे पैसों, ये सारे प्रोग्रेस, काम, ये सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है दुनिया की. ये तो सारे मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता था यार कि जो पैसों के पीछे भागता है ना, वो इविल होते हैं. मतलब वो गंदे गंदे होते हैं. उनको तो दुनिया की चीजें चाहिए, हमें चाहिए इटर्नल. लाइक वी वांट टू बी वर्चुअस पीपल, वी वांट टू बी लाइक, ये मुझे, ये मॉरलिस्टिक था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एक टाइम पे कि हाँ यार, ये दुनिया की चीजें त्याग देनी चाहिए. And that is how I was at some stage. But ironically, when I was in that stage, I made the least amount of progress. Of course, I was happy. I won't deny that. I was happy. It changed me forever. It really gave me like some sort of a weird happiness. I can't even talk about it. It was a personality transformation. But it was a starting point. क्योंकि then I realized कि यार, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं मुंह फेर ले रहा हूँ. मैं अगर डिनाई करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी मतलब स्पिरिचुअल, मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती. तो फिर लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ वीक बिहेवियर कि यार, मुझे लगा कि नहीं यार, मैं लोगों की मदद करने आया हूँ. एंड मैं मदद ऐसे नहीं करूंगा कि मैं उनको एस्केप करने में मदद करूँ, लाइक फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस. आई वुड रादर मैं उनको सोल्यूशन दूं कि देखो, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी. ये प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद ही आप अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे. यू विल इंप्रूव एज अ पर्सन. So that's my philosophical and my spiritual thoughts. कि I think of getting too much into spirituality as an escape route. ऐसा लगता है कि वीक बिहेवियर है कि हाँ, दुनिया दुनिया में मुश्किल है, मैं सामना नहीं कर सकता, चलो लेट्स टेक द स्पिरिचुअल पाथ, चलो कपड़े डाल लेता हूँ. वो मुझे ऐसा लगता है. दैट इज माई ओपिनियन ऑन दैट. सो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ पर्सनल थिंग. अगर आपको पर्सनल हिसाब से जो भी जितना एक्सप्लोर करना है करो. But when you're relying on someone entirely based on like it's coming from a book, it's coming from someone else, then there's no point in it. It should be your own thoughts that you get good with. Like आप realize करो कि हाँ, मेरा गोल क्या है. ठीक है, that is my thought. By the way, I wanted to ask this for a while. I'm 16, turning 17 this year. Should I be thinking about my career and what degree I should take? I have multiple interests. You should I've already given advice, plenty advice for this. You should actually just invest 1 hour of your day, 1 hour if you can 30 minutes every day. And you should come up with something constant. कि हाँ, हर रोज जैसे मेरे लिए वीडियो टारगेट है, आपके लिए कुछ और टारगेट हो सकता है कि रिलेटेड टू योर हॉबी. कि अगर मुझे सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है, सो I'll focus on my social skills. I'll improve my communication. I'll talk to more people. I'll meet more people. I'll make friends. I'll try and navigate relationships, friendships, things like that. Otherwise, आप अपनी कोई भी वो चीज ढूंढो जिसमें आपको इंटरेस्ट है. अगेन आई वुड एम्फसाइज इंटरेस्ट है, जिससे आपकी पर्सनालिटी मैच करती है. व्हाट इज गोइंग ऑन विद द कम्युनिटी? कम्युनिटी का क्या चल रहा है यार? मतलब एक वो है, हम लोग का मुहर्रम है. सो बेसिकली फॉर दैट. Hi Raman, hi. How are you doing? Long time. I was meaning to ask this to you यार. आप कैसे करते हो measure अपना खाना? Tell me that कि आपको क्या मतलब सारा याद हो गया है क्या? Hey, I don't know what to pursue. I can't think of anything at this stage. You can watch my videos. You can refer to my videos. जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, as Khan, you can watch my videos. I've talked about the mindsets. I've talked about how you can come up with something that you need to do in your life. I use weighing scale. Okay, I got that you use weighing scale, but you also said that you use something else. Like you don't even need to use weighing scale anymore. Something along those lines, right? Hello, bhai, recognize me. Yes, I recognize you, Ayush. I recognize you. पहचाना मैंने. कैसे हो भाई लोग? कैसे हो भाई और बहन लोग? How are you guys doing? What's up? What's up? भाई कल नीट का पेपर है और अभी प्रोक्रास्टिनेट हो रहा. ठीक है, कोई बात नहीं. काम डाउन. एनीवेज अभी तो एक ही दिन बचा है, कितना ही कर लोगे. जितना पता है उस पर ज्यादा फोकस करो. एंड फोकस ऑन क्लियरिंग योर थॉट्स रादर देन फोकसिंग ऑन टेकिंग टेंशन बेकार से. ठीक है. एंड बाय द वे, आप लोगों में से जितने भी लोग हो, अगर आपको कोई डाउट है अपने करियर को लेकर, इफ यू वांट any clarity on that and you want to discuss that with me on a call, I've attached the link in the comments, in the live chat comments. आपको मिल जाएगा where you can take career counseling with me. All right.
Hey, I am 19 and I don't know what career to take. This is my second time for NEET, first drop. Not done anything, thought of switching, but when it comes to okay, switch, but what to choose? I want to earn good money. Everyone wants to make good money. Everyone wants to. But what you need to look at is what interests you, not what makes good money, but what can get you to do some action. Okay, I'll tell you this very simple short line, which should, for people who understand it, it will be enough. Okay, it will be enough to give you guys an idea, clarity. Okay, so the line is, love what you do until you love to do. Love what you do until you love to do. The creator equivalent for this would be love to make videos until you love to make video. Sorry. Make the videos you love until you love to make videos. So do you get the concept? कि मतलब आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कोई फैसिनेशन आ रहा है, जिसकी वजह से आपको एक रीजन मिल रहा है जीने का, कि या दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी अ रीजन टू लिव, दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी अ रीजन टू एक्चुअली वर्क, दिस इज समथिंग दैट इंस्पायर्स मी. ऐसा कुछ ढूंढो, उस पर अपना एफर्ट डालो एंड डू दैट अंटिल आप इतने मोटिवेटेड हो जाओ, आप इतने इंस्पायर हो जाओ कि आपको काम करने की आदत लग जाए कि हाँ अब तो मुझे काम करना पसंद है, अब मैं आइडल बैठ ही नहीं सकता. There are people like that, by the way. My dad is like that. I know that he cannot just stay without working. He loves working so much. And like that is like, when you love to work, what do you think can stop you? You will be at the maximum joy. आपको पैसे आ रहे होंगे. You will be working towards a cause. You will feel purposeful. आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा. आपको खुशी होगी. आपको fulfillment होगी. So that is why I tell you guys to choose to work with something that you actually love to do. एंड अगर आपसे नीट नहीं हो रहा तो बार बार उसको देने की कोशिश मत करो. अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो. अपनी रियलिटी सबको पता ही होती है. अगर आप चाहते भी हो तो अपने आप को एक डेडलाइन दो फिर कि चलो एक और साल में ट्राई करूंगी या करूंगा. अगर हो गया ऑल राइट, नहीं हुआ दो, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मोर. बट वो एक साल पूरा माइंड लगा के दो कि हाँ नाउ देयर इज नोबडी कैन दैट कैन स्टॉप मी फ्रॉम मी प्रिपेयरिंग फॉर नीट. जितने भी लोग मुझे बोले, ताने आए, जो भी आए, मैं नीट दूंगा, ये दूंगी. बट उसके बाद नहीं हुआ तो एक्सेप्ट भी कर लो कि ठीक है नहीं हो रहा, नाउ आई विल मूव. But that is the reality of life. Trial and error, trial and error. This is how you find and come across a career that actually fits, aligns with your personality, but at the same time it fulfills you as well, and at the same time it can make you money as well. And it is a slow process. It takes years. Sometimes it takes 6 months. Sometimes it takes, for some people, 5 years. For some it might even take 10 years. But I can assure and guarantee you that if you keep moving, if you are making progress every day, you will get there. All of us. Yes, I have made different types of objects for different weights. For specific foods, it will be easier. My foods are same every day generally. That is so good, Raman. That is so good. That is the best way. अगर आप सेम टाइप का खाना खाते हो ना, इट्स सो डिसिप्लिन, इट्स सो नाइस कि मतलब आपको पता है कि आप इतना ही खाना खा रहे हो हर रोज. दैट्स अमेजिंग. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, Raman. That's what I do actually. When I'm not like right now, we have this community thing. मुहर्रम है तो खाना तो घर पे नहीं होता, लेकिन वैसे मेरा वो एक तो सेट है कि 4 अंडे हर रोज के और 25 ग्राम scoop of whey protein. Right? Do you, Raman? Do you know? Like I don't know if you're in this chat anymore, but I got this blue Tokai coffee wala version, and that's so amazing. Like it replaces coffee for me. I don't need any coffee or tea in the morning anymore. I just use that, and उससे मतलब मेरी नींद खुल जाती है, जो भी है मतलब मजा आता है. Like flavor सही है यार. You should try that. Muscle Blaze का blue Tokai. You should try that. I recommend that. Like I don't know how you like coffee or like that, but it's amazing. I love that. 6,500 का आया बाय द वे. वो 2 किलो, 2 kg. Sir, I'm stuck now. Like all things are gone, and my interest of doing things also gone. What to choose in future and career? What to pursue? Do not have any idea. Right now, stop overwhelming yourself. 1 kg तो ले ही सकते हैं. 1 kg नहीं ले सकते रमन. उसका 2 किलो मुझे आया ऑप्शन, 1 kg का नहीं आया. उनकर सुनो भाई कि see, if you feel like this right now, there is no point for you to think about a perfect career or passion right now. The idea that you might have is that you want to do everything at once. But let me tell you that
you should look at and focus on the smaller things right now. Look at how you can start working. आप अपनी इंजन को वार्म कैसे कर सकते हो? अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि आपकी इंजन में पेट्रोल ही नहीं है, तो आप अगर सीधा बोलोगे मुझे स्टार्ट करके मुझे 100 की स्पीड में चलना है, तो दैट माइट बी डिफिकल्ट। बट अगर आप सिर्फ स्टार्ट करने की सोचो कि हाँ कुछ तरह से मुझे मोमेंटम पकड़ना है, एंड फॉर दैट यू विल नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन समथिंग। आपको कुछ 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट कोई चीज में डालना पड़ेगा हर रोज फॉर एटलीस्ट अ वीक। आपको अपने माइंड को बिलीव करवाना पड़ेगा कि यू आर केपेबल ऑफ वर्किंग, यू हैव दिस कैपेसिटी इन यू, एंड चूज एनीथिंग। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में ही बात किया है। इन द लेटेस्ट वीडियो ओनली आई हैव स्पोकन अबाउट, राइट, द लॉन्ग वीडियो। लेट मी लुक एट द टाइटल ऑफ दैट वीडियो। Guys, we have how much more? We have like 12, 13 more minutes. Hello, Samir. Guys, exercising is absolutely important for you. See, it's been only like a few days since I have not been active. Okay, मतलब मैं regular नहीं कर रहा हूँ, and it feels so weird. मतलब मेरी body पूरा, मतलब body नहीं, मेरा mind भी mentally भी affect होता है, थोड़ा depressed सा feel होने लग जाता है यार। Guys, it's very important. Keep moving. Like activity रखो अपनी, वॉकिंग से स्टार्ट करो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो या तो जिम जाओ, कुछ भी करो, घर में एक्सरसाइज करो। अगर नहीं मिल रहा है तो या तो सिर्फ छत पे जाके वॉकिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ करो यार, वरना बहुत अजीब सा लगने लगता है। मुझे तो अजीब लगने लगता है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। आधी तो प्रॉब्लम ऐसे ही कम हो जाएगी आपकी अगर आपने एक्सरसाइज करना डेली शुरू कर दिया तो। सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, डज नॉट हैव टू बी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट, कुछ भी, लेकिन हर रोज होना चाहिए। आई एम फाइन, आई एम ग्रेट समीर। लाइक आई फील बेटर यार। कैसे मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। आज तो वैसे नॉर्मल सा डे गया मतलब, लेकिन अब तो अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। एंड अभी 12 मिनट के बाद आई विल गो फॉर माय वर्कआउट। अच्छा यार, मुझे वीडियो की टाइटल में हेल्प कर दो गाइस यार। व्हाट शुड आई कीप एज माय टाइटल? आज की वीडियो है लाइक फॉर पीपल हु नीड मोटिवेशन। व्हाट शुड बी द टाइटल फॉर द वीडियो यार? आई डोंट नो अबाउट द टाइटल फॉर टुडेस वीडियो यार। इट्स अबाउट माय माइंडसेट, इट्स अबाउट माय फिलॉसफी कि कैसे आपको खराब टाइम में भी कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और कैसे हाउ टू कीप गोइंग व्हेन यू आर हैविंग अ बैड टाइम, समथिंग लाइक दैट। How to keep going? Okay, let me look. uh, how to keep going in hard times? That sounds like a good title. You're doing great, bro. Thanks, Ashmit, thanks. What about man taking inspiration from them? Hi, Mushfiqa. Hi. Onkar, I've already given you an answer. I've told you that right now you need to start small. आप कुछ छोटी चीज है, आप कुछ छोटी हैबिट से स्टार्ट करो, एंड अपने एक वो बनाओ कि ठीक है एटलीस्ट हर रोज मुझे ये तो मिनिमम करना है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड राइट नाउ।
मैंने आपको बताया है कि कोई कोई भी छोटी सी चीज लो और उसको अपना रूटीन बनाओ राइट नाउ, फोकस ऑन दैट। किसी सेलिब्रिटी से मिले हो? किसी सेलिब्रिटी से मिला हूँ? नहीं यार, मुझे याद नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है। I think I'm the biggest celebrity that I have met, and I get to meet and I get to live the life of as a celebrity. Okay, that was okay. What should be the title? ब्रो, कंपटीशन पसंद नहीं है, कुछ एडवाइस दो। देखो, अगर कंपटीशन पसंद नहीं है तो आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिसमें आपको कंपटीशन की परवाह ही नहीं होती, जहाँ पे यू आर डूइंग थिंग्स नॉट बिकॉज यू वांट टू compete, बट यू आर डूइंग थिंग्स बिकॉज यू लव देम। तब कंपटीशन पता भी नहीं चलेगा। गिव मी अ बिट। सही बोले ब्रो, थैंक्स। Guys, I just saw something very disturbing. Uh, so please, guys, जाने से पहले बस stream खत्म कर रहा हूँ, but like I just saw something really disturbing. There was like an accident that I just witnessed, and what I would suggest you guys is, I don't know if you guys are like old enough, if you guys go in two wheelers or what, but I would suggest you कि यार जितना हो सके ना टू व्हीलर्स में मत ट्रैवल करो।
एंड अगर ट्रैवल करो तो प्लीज सेफली ट्रैवल करो यार, अपनी हेलमेट पहनकर. I just saw some very disturbing stuff. I saw an accident and it was not good. I there was a lot of blood I saw. I just very disturbing. वो मेरे सामने हुआ अभी. Like that is what, like I heard the sound of an accident and I immediately ran. And yeah, that was not good. Please guys, please, if you're in India, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो या फ्यूचर में चलाने वाले हो, तो प्लीज बी ड्राइव लाइक राइडिंग वेरी सेफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल टू यूज टू व्हीलर्स. लेकिन अगर आपको यूज करना पड़े तो प्लीज बी सेफ. मतलब हमेशा सामने वाले को जगह दो, सामने वाले को जाने दो. अज्यूम कि आपके आसपास जितने भी लोग चला रहे हैं वो पागल है, उनमें अक्ल नहीं है चलाने की, वो नहीं रिस्पेक्ट करेंगे ट्रैफिक लॉस की. सो व्हेनेवर यू ड्राइव सो और राइड, ड्राइविंग तो ठीक है, चलो चार चक्कों में आप सेफ रहते हो, बट please guys, in two wheelers, like one thing, it can be one little mistake, one small thing, it can like completely change your life. Please guys, please be safe. What I just saw right now, it was very disturbing. I think that guy, he was bleeding from his head or something, कोई major injury आ गई थी, बहुत ज्यादा blood flow हो रहा था, बहुत ज्यादा blood loss हो रहा था. Very sad, very disturbing, but see, that is the thing, yaar, that is the thing. So please be careful when you're driving or riding on Indian roads. Wear helmets, wear proper safety, follow proper safety rules. The last advice, suggestion, motivation you need. That is not a bad title, Raman. I don't know, yaar. I'll think about it. This is a good title. The last motivation you need. The last, watch this if you need motivation. नहीं यार, ये बहुत generic हो जाता है. I don't know. I can't come up with a title for some reason. My mind is blanking. What I just saw, oh my god, that was disturbing, guys. I regularly use bike for college. Okay, it's okay as far as the Odyssey देखोगे. नहीं यार, नहीं देखूंगा most probably. मैं movies नहीं देख रहा आजकल. पता नहीं क्यों, obsession भी नहीं देखी मैंने. I regularly use bike for college. Be safe, just be safe. That's my message. I'm not like, of course, two wheeler बहुत लोग avoid नहीं कर सकते. I understand that, but जितना कर सकते हो करो, अवॉइड एंड बी सेफ. लाइक बहुत सेफली चलाओ भैया. इफ आई डोंट नो माय पैशन एंड आई एम थिंकिंग, इज इट लेट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स आफ्टर 7? इट इज नेवर टू लेट, साशी, इट्स नेवर टू लेट. देखो, क्लैरिटी काम करने के बाद आती है, ना कि आपको पहले क्लैरिटी आएगी फिर आपको काम करना है. दैट इज द ऑर्डर ऑफ इट. ओके. हाय गजम, हाय गजम. ऑल्सो गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग टू स्ट्रीम. 1-2 मिनट बस लास्ट आपके लिए, एंड उसके बाद हम स्ट्रीम खत्म करते हैं. आई विल गो टू द जिम एंड इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ अ वाइल. टाइटल डिसाइड करके नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर मेरी आज की वीडियो भी लाइव हो जाएगी. दैट इज फॉर पीपल हु फील लॉस्ट, फॉर पीपल हु डोंट हैव एनी आइडिया, पीपल हु आर गोइंग थ्रू हार्ड एंड डिफिकल्ट डेज, उनके लिए आज की वीडियो है मेरी. व्हाट आर द एडवाइसेस यू विश यू न्यू एट 17? मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है मुशफिका. लाइक आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो टॉकिंग इन डेप्थ अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आई विश आई वुड डू व्हेन आई कुड गो बैक एट 18. तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में चेकआउट कर लो उसको. ऑल्सो गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग टू स्ट्रीम. और अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अपने करियर में कोई प्रॉब्लम है, आपको करियर में क्लैरिटी चाहिए, तो आप और आप चाहते हो कि आप मुझसे गाइडेंस लो, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाओ एंड मैं आपको सजेशन दूं, मैं आपको एडवाइस दूं, तो यू कैन चेक द लिंक आउट. जो लाइव चैट पे वो जो लिंक है उसमें क्लिक कर सकते हो एंड यू विल फाइंड दैट लिंक, जहां से आप मेरे साथ काउंसलिंग ले सकते हो. वहां पे मैं आराम से बैठ के आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और मैं आपको एडवाइस भी दूंगा ऑन अ वन-on-one कॉल. Man, I saw so much blood. I saw blood. It's disturbing. It was disturbing. Something about just watching accidents, live accidents, it just disturbs me a little bit. It just really disturbs me a little bit. ब्रदर, इफ यू मुझे मौका हाथ से निकल जाने पर रिग्रेट हो तो क्या करे? तो आगे ही सोचो. एटलीस्ट इंश्योर करो कि आगे के तो मौके ना निकले. अगर एक अपॉर्चुनिटी निकल गई तो क्या कर सकते हो आप इंश्योर कर सकते हो कि आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी ना निकले. एंड वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत और काम.
be aware. And how will you be how will you get aware? By improving yourself, by self improvement, by changing yourself, by upgrading yourself, by learning, by being in love with the work that you do. These are the ways, समीर. एनीवेज गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही. मिलता है कल की स्ट्रीम में, ठीक है. बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एंड बी सेफ, ठीक है. प्लीज बी सेफ गाइस.